So in the previous videos, we have completed phylum Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, and now it's time to study the next phylum, and that phylum is Arthropoda. सो ऑर्थ्रोपोडा में पहले फाइलम जिस पैटर्न में जिस फ्रेम में हमने स्टडी किए हैं उसी फ्रेम में उसी पैटर्न में विल स्टडी द ऑर्थ्रोपोडा. द वर्ड itself indicates its meaning. First, ortho, and second one is poda. Ortho means jointed. Ortho means joint, and poda means appendages. Appendages. So इसलिए जो मेंबर्स ऑर्थ्रोपोडा में है उसको हम कहते हैं कि दे हैव जॉइंटेड appendages. That is what the first general characteristics. So first is we'll discuss general characteristics. So which is first general characteristics? The first general characteristics जो ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर है उनमें होती है एंड दैट इज दे हैव क्या है जॉइंटेड अपेंडेजेस. दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस इसलिए उसका नाम रखा गया है ऑर्थ्रो इज जॉइंट. जॉइंट आप लोगों को पता है द जॉइंट मीन्स द प्लेस विच कनेक्ट द टू बोन्स. एंड यहां पर भी ऑर्थो मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस. देयरफॉर उनका फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है कौन सा? दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. दैट इज द फर्स्ट. सेकेंड जनरल कैरेक्टर्स इज अबाउट द phylum Arthropoda is first largest phylum. First largest phylum of kingdom Animalia. किंगडम एनिमैलिया का सबसे लार्ज जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स इंक्लूडेड है बाय नंबर्स. इसलिए ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसको क्या कहते हैं? इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमैलिया. जब हम मॉलुस्का पढ़ेंगे तो मॉलुस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमैलिया. हेंस दैट इज द सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमैलिया. कितना लार्ज है? तो 2/3 animals on earth, 2/3 animals on earth are कौन है? 2/3 animals on earth are arthropods. It means they are large in number. 2/3 मतलब अगर 100 एनिमल्स आप अर्थ पे ढूंढोगे तो उसमें से 70 एनिमल्स आपको इंसेक्ट्स ऑर्थ्रोपॉड्स मिलेंगे. मतलब दे आर प्रेजेंट 70% ऑन अर्थ. दैट इज व्हाट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से दिस इज द थर्ड पॉइंट. देन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. Then special characteristics. And which are the special characteristics? First, members of arthropoda की जो बॉडी है पहले ही कहा है कैसे है? जॉइंटेड अपेंडेजेस. कैसे है? तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ, उन लोगों की बॉडी में क्या है? बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्या है बॉडी में? फर्स्ट हेड, second thorax, and then abdomen and stomach. मतलब बॉडी जो है डिवाइडेड इट इनटू द 3 सेगमेंट्स इसलिए उनको सेगमेंटेड भी कहते हैं. बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, thorax and abdomen. That is the first special characteristics. Second special characteristic is body is covered
by chitinous. Body is covered by chitinous exoskeleton. बॉडी के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन है एंड दैट एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है? तो दैट एक्सोस्केलेटन इज काइटेनियस, मतलब इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ऑर्थ्रोपॉड्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट हैव काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिन से बना हुआ है। काइटिन क्या है? तो काइटिन इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है जो नेचर में प्रेजेंट है एंड दैट इज रिजिड सब्सटेंस एंड उसका कवर है, इसलिए दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि आपको पता है कि कॉकरोच, दीज आर इंसेक्ट्स, दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, फाउंड इन एवरी सीजन। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी जो कवर है वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से बना हुआ है एंड काइटिन क्या है? तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर। इसका मीनिंग आपको पता होगा। पॉलीसैकेराइड मीन शुगर, दैट इज द सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, उन्हीं के जैसा, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो दिस इज द सेकेंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन थर्ड आता है कि हाउ द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोड्स रेस्पायर, हाउ दे परफॉर्म द रेस्पिरेशन, which is respiratory structure in them. So respiratory organ in the member of arthropods are कौन से है? नंबर वन, गिल्स। जो आपको पता है कि गिल्स आर द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन एक्वाटिक एनिमल्स। जो एक्वाटिक एनिमल्स को अंडर वाटर रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन इज टेकन आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ये करने में जो स्ट्रक्चर हेल्प करता है दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपॉड्स। सेकेंड इज बुक गिल्स। कौन सा है? बुक गिल्स, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो पेजेस इन बुक्स, बुक्स में जैसे पेजेस होता है ना, अल्टरनेट वन आफ्टर अदर, उस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसलिए उन गिल्स को हम कहते हैं बुक गिल्स। देन थर्ड इज बुक लंग्स। जैसे कि आपको पता है कि लंग्स इज आवर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, तो ये बुक मतलब प्रेजेंट अल्टरनेट वन आफ्टर अदर लाइक अ पेजेस इन बुक्स, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? बुक लंग्स। एंड फोर्थ इज ट्रैकियल सिस्टम, एंड फोर्थ इज ट्रैकियल सिस्टम। सो दीज आर द फोर respiratory structure in the member of arthropoda, that is insects. कौन से? गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रकियल सिस्टम। दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। कौन सा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये होने के बाद विल डिस्कस कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, दे हमने देख लिया है। उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं वो भी हमने देख लिया है। देन वी हैव फोकस, कौन से स्ट्रक्चर पे? वी हैव फोकस ऑन द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होने के बाद जो मेंबर्स है आर्थ्रोपोडा के, उनमें बहुत और भी सिस्टम्स हैं। देन सेकंड इज circulatory system. So member of arthropoda में circulatory system कौन सी है? तो they have
सर्कुलेटरी सिस्टम्स, मतलब जैसे कि हमारे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सी है? जैसे कि हमें पता है कि वी हैव टू सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उनमें से हम लोगों में कौन सी है? उनमें से हम लोगों में मीन्स इन ह्यूमन बीइंग हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड कभी भी बाहर नहीं आता है। बट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, एंड ओपन टाइप मतलब ब्लड पंप बाय हार्ट एंटर इट इनटू द कैविटी, कैविटी में आता है। एंड कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स होंगे, the organs which are present in the cavity, they are completely bathed, and during that bathing the nutrients exchange take place and exchange of respiratory gases also takes place. So circulatory system is कौन सी है? Open type. Then third one is excretory structure, which is excretory structure प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स मीन्स इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, and these small tube-like structures is responsible or is act as a excretory structure। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का और मल्टीगियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होगा? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। सो हमने कौन से सिस्टम? रेस्पिरेटरी, सेकेंड सर्कुलेटरी, थर्ड एक्सक्रीटरी। नो फोर्थ वन, अगर आपने कॉकरोच देखा होगा तो कॉकरोच इंसेक्ट एंड इंसेक्ट इज आर्थ्रोपोडा। तो उन लोगों में और मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा में सम सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। क्या होते हैं? सम सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एंड दिस सेंसरी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? तो दिस सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीना और एंटीनी। जैसे कि आपने देखे होंगे कि कॉकरोच के ऊपर हेड रीजन में एंटीनी होती है, वो एनवायरमेंट को सेंस करती है, उनसे उनको पता चलता है कि आगे क्या है। तो फर्स्ट इज एंटीनी, दैट इज द सेंसरी स्ट्रक्चर, एंड सेकंड वन इज आईज। इट मे बी द कंपाउंड आईज, इट मे बी द कंपाउंड आईज और इट मे बी द सिंपल आईज। So simple eyes, compound eyes and antenna, these are the structures which are present in, and these structures क्या होते हैं? These structures act as a sensory, they give the sense to the organisms, right? So this is sensory structure। ये होने के बाद another most important is the members of arthropoda, and that is एग्जाम्पल्स। कौन से एग्जाम्पल्स आर्थ्रोपोडा के हैं? जैसे मैंने पहले ही कहा है, क्या कहा है कि द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा और द फाइलम आर्थ्रोपोडा कैसा है? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्ज फाइलम है। 2/3 एनिमल्स present on the earth belongs to arthropoda, right? So second one is examples। तो आपके किताब में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट उनको उन्होंने कैटेगराइज किया है। सो दिस इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स को आप कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो आपकी किताब में जो दिए हैं उसको हम फोकस करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है लोक्यूस्ट, सेकंड दिया हुआ है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स विच एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। थर्ड दिया है लोक्यूस्ट, बटरफ्लाई,
स्कॉर्पियन, फोर्थ दिया है प्रॉन। These are the regular examples which are present in your NCERT books. कितने? 4 ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा पे ये क्वेश्चंस बनता ही है एंड मोस्टली किस पे बनता है? तो एग्जाम्पल्स पे, राइट? ये दिए हैं लॉक्यूस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन, इन सबको आपने देखा होगा। इसलिए इसके बाद जो फाइलम्स है उसका स्टडी थोड़ा इजी लगता है क्योंकि एवरी डे वी कैन सी देम, देखते हैं। नाउ सेकंड ग्रुप ऑफ एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट ग्रुप ऑफ एग्जांपल। सेकंड ग्रुप ऑफ एग्जांपल इज इकोनॉमिकली, इकोनॉमी इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, जिससे हम कुछ ना कुछ मनी गेन कर सकते हैं। तो उसमें है 3 एग्जांपल। फर्स्ट इज एपीस, second one is bombax, and third one is lassifer. Third one is lassifer. So this is the second group of examples and उसको नाम क्या दिया हुआ है? सेकंड ग्रुप को हम लोगों ने नाम दिया है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, राइट? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। एपिस को दूसरा नाम क्या है? तो एपिस वी आल्सो कॉल्ड इट एज हनी बी, bombax silkworm, and third lassifer, that we called it as, in our local language we called it as lac insect, we called it as lac insect, right? So this is the second category. इसके बाद थर्ड कैटेगरी बनी हुई है और थर्ड ग्रुप बना हुआ है एंड दैट थर्ड ग्रुप which includes the example of arthropods are, कैसे है? तो it is vector। एंड आपको पता है कि वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर मतलब कि लाइक अ व्हीकल, ऑटो, बाइसिकल, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है उसे हम कहते हैं वेक्टर। सो वेक्टर का काम करने वाले भी ऑर्थोपोडा के मेंबर है एंड वो मोस्टली कौन से हैं? तो दीज आर मोस्टली मॉस्किटोज। कौन से मॉस्किटोज है? नंबर 1 एनाफिलस, Anaphyllus. Second, Culex. Third, Aedes. So these are the another 3 examples. किसके? The group of Arthropoda के. Then fourth example also or fourth group is also, and that is in the category of gregarious pest. Pest आपको पता है which attack on plants. Gregarious means which are present in large group, एक साथ आते हैं अटैक करते हैं, दैट इज ग्रेगेरियस पेस्ट। एंड उसका एग्जांपल कौन सा है? उसका एग्जांपल है लॉक्यूस्ट और लॉक्यूस्टा, लॉक्यूस्ट और लॉक्यूस्ट। एंड देन फिफ्थ कैटेगरी ऑफ एग्जांपल इज लिविंग फॉसिल, लिविंग fossils, and that living fossil is ल्यूम्यूलस एंड उसको ही दूसरा नाम है किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब विच रिमेन अनचेंज्ड फॉर मेनी इयर्स, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। एंड लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स करके ऑर्थोपॉड्स का कौन सा मेंबर है? तो दैट इज ल्यूम्यूलस, किंग क्रैब। एंड उसको हॉर्स शू, हॉर्स का जो फुट होता है उसके जैसा वो शेप में होता है एंड रिमेन लाइव और रिमेन सेम, रिमेन अनचेंज फॉर मेनी मोर इयर्स, इसलिए उसको नाम दिया हुआ है लिविंग फॉसिल्स, ल्यूम्यूलस, किंग क्रैब। इस एग्जाम्पल पे एक क्वेश्चन आपको आराम से मिल सकता है, इसलिए इसको बहुत आराम से लर्न करना पड़ता है, राइट? So these are the members. We'll repeat one more time because these are very important.
Examples, members. First, locust, butterfly, scorpion, prawn. Second category, economically important. Apis, bombax, lassifer. Apis means honey bees, bombax means silkworm. Lassifer means lac insect. Third category, vector. They work as a vector. Mosquitoes. कौन से? Anopheles, Culex, Aedes. Then gregarious pest. Locust, Locusta. Same. Then living fossils का examples Lumulus, king crab. So this is very important slide, can help you to solve one question on arthropods. ये एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद जो वन मोर पॉइंट बाकी रहता है रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, वो है regarding reproduction. So these are dioecious, and dioecious का मीनिंग वही है जो हमने पहले वीडियोस में बताया था. क्या? Sexes are separate. जैसा कि आपको पता है, in cockroach, male cockroach is different than female cockroach. So it is dioecious. Second important is sehi related is fertilization. Fertilization कैसा है? तो fertilization is internal, takes place within the body. Fertilization कहाँ होता है? Takes place within body. उसके बाद इन लोगों का डेवलपमेंट कैसा है? इन डेवलपमेंट कैसा होता है? तो डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. राइट? डायरेक्ट मतलब गिविंग डायरेक्ट बर्थ टू द यंग वंस, इनडायरेक्ट मतलब थ्रू द लार्वल स्टेजेस. राइट? सो दिस इज डेवलपमेंट. डायोइसियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ये होने के बाद हमने जो फ्रेम बनाई ये पूरे के पूरे फाइलम स्टडी करने के लिए, उसका लास्ट पार्ट क्या होता है? तो लास्ट पार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा और क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा कंसीडरिंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. हम लोगों को पता है कि देयर आर 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. नंबर 1 नोटोकॉर्ड, नंबर 2 फर्स्ट नोटोकॉर्ड लास्ट सेगमेंटेशन, बचे हुए हैं 4 में से फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड बॉडी सिमेट्री, third diploblastic or triploblastic organization, and fourth coelom. तो इनको अगर हम कंसीडर करेंगे तो मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा क्या शो करते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Which type of body symmetry they possess? They show bilateral body symmetry. Diploblastic or triploblastic organization, they are triploblastic. And coelom, considering coelom, they are coelomate. And last, they are segmented. Therefore, first characteristic में मैंने कहा था कि their body consists of head, thorax and abdomen segments. So considering basis of classification, organ system, bilateral body symmetry,
triploblastic, coelomate, and segmented. So this is all about the arthropoda. तो क्या क्या कहा, क्या क्या डिस्कस किया, आई विल टेक जस्ट अ रिव्यू. जॉइंटेड अपेंडेजेस. फर्स्ट, body consists of head, thorax, abdomen. Body is covered by chitinous exoskeleton. Respiratory structure: four gills, book lungs, and tracheal system. Then circulatory system. Circulatory system is open type. Malpighian tubules are act as a excretory structures. Antennae and compound and simple eyes act as sensory structures in the member of arthropoda. Then we have discussed the examples in four categories: general examples, economically important examples, examples which act as a vector, gray area space, and last example is the living fossils. Then we discuss the dioecious. They are dioecious. Fertilization, internal development may be direct or indirect. And last, considering the basis of classification, organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic organization, and last one is coelomate and segmentaceous. This is all about the phylum Arthropoda, which is the first largest phylum of kingdom Animalia. In the next video, we'll discuss the next phylum, and that is mollusca.